How to stay grounded when the world constantly demands performance. सो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा इसमें कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपके अस्त्र शस्त्र क्या हैं। मीन्स यू आर ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड विद सो मेनी हाई पावर्स। वो अगर आपको कहीं उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लर्न करने के लिए, तो वो अगर आपको मिल जाए तो आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है वर्क की, परफॉर्मेंस की। देन यू स्टार्ट प्लेइंग इन एक्सलेंस जोन ऑल द टाइम्स। इसको बोलते हैं कि डिवाइन प्ले, लीला रचते हैं। फिर यू स्टार्ट प्लेइंग डिवाइनली। अब इसमें है क्या, अपने आप को समझना है कि ये एक व्यक्ति, एक पर्सन क्या है, वो बना हुआ किस चीज़ का है। ये फिजिकल बॉडी के अंदर, इसी के अंदर माइंड रहता है, इसी के अंदर हमारा पूरा पर्सोना है, पर्सनैलिटी है, इसी के अंदर हमारी आत्मा है, सोर्स ऑफ गॉड इन अस। एंड इसी के अंदर हमारी स्पिरिट है जिससे हम एंगेज करते हैं, एंटेंगल करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली ये पांचों चीज़ें हमें कंप्लीट बनाती हैं। तो अगर आपको इनकी पांचों के बारे में पूरी तरह से समझ, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग, सो आप हमेशा सुपर एक्सलेंस जोन में रहेंगे। योर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट, स्टेट ऑफ इंट्यूशन will be superb because you are connected with the best source of the universe within you. So आपको ये प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी। अब हम बोल दें मेडिटेशन, ये सब ठीक है, योग, ये सब सब सही है, बट उसमें बेसिकली क्या वो आपके एक्सपीरियंस में सुपर नेचर आई या नहीं आई, ये प्रैक्टिस फॉलो करने के बाद। तो अगर आपको सुपर नेचर अडोप्ट करनी है अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी डे टू डे वर्किंग में, अपना जो भी काम है, पर्सनल लेवल का है, प्रोफेशनल लेवल का है, स्टूडेंट का है, तो उसके लिए आपको इन पांचों को एक तरह से परफेक्टली प्ले करना सीखना है। प्ले करने सीखने के लिए फिजिकल बॉडी को ध्यान देना है। हमारे बोलते हैं सनातन में इसको एटर्नली दे आर एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। अभी क्या है, पंचकोश की बात करते हैं हम। अब पंचकोश, 5 ट्रेजरीज, 5 कोश, कोश का मतलब ट्रेजरी। सो ट्रेजरी में क्या है, पहला बोलते हैं कि अन्नमय कोश। अन्न, जो वट एवर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इनपुट फीड वी टेक ऑन, ये जो हम खा रहे हैं वो जाके हमारा प्राण बनाता है। प्राण को मतलब ऊपर नीचे करता है, स्टेट ऑफ प्राणा। दैट अगेन दैट इज दी भगवान का जो हमारे पास अलॉटेड है इस बीइंग के अंदर, उसकी स्टेट को ऊपर या नीचे करता है अन्नमय कोश। प्राण को ऊपर नीचे, जब प्राण जैसा होगा, लो फीलिंग का होगा या सुपर फीलिंग का हो, एनर्जेटिक होगा, अकॉर्डिंगली प्राण के हिसाब से मन हमारा ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे चलता है। अब मन हमारा, कोई हमें अच्छी लगती है कोई चीज़, कोई अच्छी नहीं लगती है। वो क्यों नहीं लगती, हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं है, चॉइस के हिसाब से नहीं है, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो वो हमारा हमारे हिसाब से नहीं होता, इसलिए ऊपर नीचे होता है। जब हमारा मन विचलित होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, अनीज में होता है, तो माइंड जब अनीज में है तो उस टाइम हमने क्या देखा कि बिकॉज ऑफ रूट कॉजेस अन्नमय कोश, देन द प्राणमय कोश गेट अफेक्टेड, देन हमारा मनोमय कोश। अब हमारे 3 कोश हो गए। अब हमें फोर्थ पे जब हम जाते हैं, विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश, वी become aware and experienced of the gyan in us. The 5 complementing superpowers in us, which are 4 are invisible, only the physical body is visible. So invisible power is more than, that is supernature. Try to understand. That is metaphysical, beyond physical. So we have to experience the metaphysical powers in us, we have to optimize, take care of this physical. And in this present moment, every moment, it is variable, changeable. So we need to take care of it each and every, in each and every breath. Every moment we have to consider and we have to remember that who we are. So if we are operating from the state of this understanding, then you will never ever have the kind of issues what people are facing. They are
different parameters. And once we are aware of Vigyan Kosh, that everything dwells within us and we optimize, and when we are sure enough, we get a certainty that, oh, everything is within me, I need to make right choices. If I make right choices, I am blessed already. So I need to just apply the supernature through me. So basically I become a living electrode of God. I start representing the God nature through me. So that is your take. You have to opt that in. You have to wear this dress, this robe all the moments. And next, after Vigyan, when you are aware, once you are aware of this, then you become Anandamay, blissful state. Wow, I am already gifted with each and everything what is required to carry forward this life. And this life, the purpose of this life again is to represent the essence of God through me. जब मैं परमात्मा को प्ले कर रहा हूँ, आत्मा का रोल प्ले कर रहा हूँ, जब मैं अपने स्पिरिट का रोल प्ले कर रहा हूँ, हर चीज मेरी पर्सनैलिटी की अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड है, सो सर्टेनली आई एम फुल्ली representation of God. So in that understanding, we are always full of blessings. My first takeaway is that सारे systems मेरे अंदर ही हैं. Like I am self-sufficient. God made all of us self-enabled and what we call Atmanirbhar. And this five koshas thing, if I were to break it down in simple terms for all of our Gen Z and millennial people who are watching this, that हम जो खाते हैं उससे हमारा प्राण बनता है, लाइक आवर एनर्जी. सो फूड इज एनर्जी, ये हमने स्कूल में भी सीखा. वी लर्न दिस इन साइंस. आफ्टर मतलब हमने जो खाया, अन्नमय कोश, इट टर्न्स इनटू प्राणमय कोश, आवर एनर्जी. देन आवर एनर्जी वी पुट इट इन प्लेसेस. जैसे अगर मेरा कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ सर्टेन क्लाइंट, तो मैंने अपनी एनर्जी उधर डाल दी. और इफ आई एम एन एस्पायरिंग स्टूडेंट, आई एम वर्किंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैंने अपनी एनर्जी उधर डाल दी. तो मेरा मनोमय कोश उन चीज़ों पे लग गया. नाउ आई एम फोकसिंग विद माई माइंड ऑन देयर, एंड बेस्ड ऑन दिस चेन, वो माइंड से फिर उधर से आई एम गेटिंग दैट knowledge, that vigyan, and then based on that, then we go on to anandmay kosh, which is that blissful state. So if we keep all these five things in check, then that will help us stay rooted. Is that true? Yes, yes. First three जब प्रैक्टिस में आती हैं, उसके बाद फोर्थ जो विज्ञान में है वो आपके एक्सपीरियंस में है. इट बिकम द नॉलेज बिकम प्रैक्टिकल, दैट यस वेर एवर आई पुट माई फोकस इट हेल्प्स मी. So you become sure enough that you don't need anything out from outside. And once you have this experience within, then you are blissful. That is, then stage next arrives. Oh, Anandamay, I am blissed. I am so much blissful. Okay, so to correct my understanding, vigyan mein would be more of that inner wisdom, like understanding. Understanding means it's about learning that first Annamay, Pranamay, and Manomay. These are integrated, and when we project this in any one Manomay, we put our mind there in any of the work, outer work or inner work, so it comprehend, and if we, when we achieve the result faster or easier, effortlessly, सहजता से, वो इसीलिए होता है कि पहले ऑप्टिमाइज्ड हैं एंड वी आर ऑलरेडी एट ए लेवल ऑफ क्रिएटिव जोन. सो वी क्रिएट व्हाट वी प्लान because of first three foundations are super strong, and then it become our experience. Then vigyan is that, like science, we understand this science because we are applying practically. So this is this become practical experience. So when you know how things are happening in your life, you need not to ask anybody from outside, because you become a perfect master in this. Or when you are aware of this practical process, you become blissful. Anandamay is that you are aware of it. What? That the supernature, superpower, God, whatever you call it, it already dwells within me, and I am applying the essence through the system.
already established eternal system. Got it. So I got a lot of clarity on this. The second question here is, ये एक spirituality related myth भी है, that do we need to slow down to stay grounded, or is it possible to be fully active in the world and still remain centered inside? मतलब जैसे हमें बताया जाता है कि चलो एकदम से डिटैचमेंट कर लो या मोह माया होता है ये सब, सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फॉग अराउंड दिस एरिया, दैट इफ यू वांट टू परस्यू स्पिरिचुअलिटी और इनर अवेयरनेस देन यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. इज दैट ट्रू, या कोई अपने मटेरियल गोल्स अचीव करते समय भी प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल रह सकता है? कैन दे स्टे प्रैक्टिकली ग्राउंडेड इन रियलिटी? Yes, yes, certainly. प्रैक्टिकली ग्राउंडेड रह सकते हैं, प्रैक्टिकली ही ग्राउंडेड रहेंगे. आपको ये समझना है कि जो आपके गोल्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, रिटर्न आएगा उसमें. इफ यू आर पुटिंग योर ऑल energy, focus, everything into a process to get a outcome, for that you will get it. Because very simple, if you do not put your focus into your work or task, where you will put your focus? So those so so a person who is not putting 100% of all these five faculties into the process to achieve the the goal, so that person is missing. So you need to know yourself, you need to be very honest with yourself, that oh, I checked this, I checked this, I checked this, I am through. And this body now is dancing. All the cells, the trillions of the cells in my body, is each cell is a universe. So each cell is dancing in sync with the supernature. That is always powerful. That is always wise, so intelligent. That is always loving. And when we become closer and closer to that system, means the pure with the system. The pure is the perfection. The pure is the shortest distance between the supernatural system and the personal system. Means personal, this microcosm, and the supernature is macrocosm. The whole universe is operating. The similarly, my little universe is also operating. So we have to apply day on day basis. Okay, got that. I loved the macrocosm and microcosm explanation. The third question we have here is, when someone feels drained or disconnected because of this performance chase. अब ये तो I think it has been well established that if someone is keeping all of their koshas in check, they won't feel this in the first place. But let's say I'm a very beginner person, like I'm a student, I don't know how to start up. So if I'm feeling drained and disconnected because of this performance chase, what is the first step to grounding myself again, practically and internally? Again, as you said, 5 koshas are more important. The pranamay kosh is very much important. When we feel drained, that the prana is lower than the requirement. So it may be many reasons. We are made up of 5 elements. So either of the element may be in imbalance. It may be water, it may be air, it may be the Agni Tattva, the fire element in us, it may be earth element, lack of grounding, lack of connecting with the mother earth, or it may be because of uh, akash, like akash tattva is when we are at complete rest. So the person is missing complete absence of the rest. For certain, when we go to deep sleep, it is complete rest, means mind is at rest. Our all the subtle things are at rest when we are in deep sleep. So it depends. They need to keep themselves hydrated. The breath has to be of the full capacity of the lungs. So these are basic things. When we get into the deeper explanation of the koshas, we will certainly share all the things with you. Perfect. I think that just answered our questions. Thank you.